start the organization behavior. That is the management process. Okay, how the management process um, uh, and how the organizations and how the behavioral aspects of the employees, executives, and managers they are in their organizations. We will going to learn. We will going to see. So first of all, let us discuss what is management system and the process is all about. So management is applicable everywhere, and it has become the key to success in modern world. Okay, management is applicable to everywhere. Okay, every organizations they require to make a decisions. They need to have a coordination of activities, handling the people, how to control the operations directly towards its objectives. So these are the numerous features of every organization have. Making decisions, coordinating with the employees, coordinating with the activities, handling people, how to control the operations. These are all comes under the management process. Now, under this process, there are specific management problems are there. Under this management process, there are specific problems are there. And today we will going to discuss such the management processes, how to deal with this difficulties or obstructions that are coming in their ways. Okay, so there are, you can say, many managements are there, many managements, many enterprises are there. For example, public enterprises management, marketing management, okay, productions or operations management, and all. So during this, there is one important and one of the most important features of this processes is that decisions making, which is one of the most important criteria we will going to discuss. Decision making. Okay, suppose a scenario where you need to take a decisions very quickly and very promptly. Okay, and that particular decisions must be in organization's profitable way, in organization's profit way. Okay, so these are the things. So what are the this management skill are there, and how the decisions being taken we will observe through. Okay, first of all we will going to learn and we will going to see that during this globalizations, okay, of economic growth, the multinational corporations, or you can say the multinational companies, they tend to have the opportunities, they tend to have the opportunities to deal with the knowledge, to deal with the environment, to deal with the principles, to deal with the techniques. Now, everywhere in this in every growing industry, okay, every growing industry, every growing factories, every growing enterprises, you will see there is a smooth running of management process. Okay, they are very much skin and very much specific about the processes. Okay, they always try to follow the principles. Okay, they always try to follow the principles, they always try to maintain the decorum inside their process. They doesn't want to break that cycle or chain of the management process. Okay, if any cycle or any chains going to break down, then the process will remain incomplete. So the management process is a very important aspects from the organizations, of any organization's point of view. Okay, am I clear, Madhusmita? Is it clear to you? I'm just starting with the brief discussions about what is the management process is all about. Am I clear? Yes. Hello, am I audible? Yes, so you're audible. Hello. Okay, today I have sent you some notes. Have you got it? What are the formats of letter writing, business letter writing, format of email writing? I have sent you. Have you got it? Receive it?
Yes, sir, we have received. I have gone through it. Any still, if you have any doubt, anything which has been not yet been completed, still, if you think that this part section is we need to uh, um, means recapitulate it again, then you can tell me any part which is remaining. Okay, I think I have given you the memorandum, how to write a format of a memo, business letter, email writing, report writing, proposal writing. I have given you the five formats of technical writing skill. You just go through that. Okay, you just follow these things. The structure I have already given you, the outer structure, outing layout of this technical writing skill. Just you need to follow. Okay, now let us come with the definition of management. What is the definition of a management? So, management is the management is, you cannot get a specific definition of any of a management. Okay, you cannot get any specific particular definition. Suppose communication has its definition. Okay, so same here, the definition of management is something different from one perspective of point of view of authors to another perspective. Okay, so there is no specific definition. In short, I can say you that if you want to know the definition of a management, first of all, you should know the classifications of management process. Management is deal with an art of getting things done. Management is an art of getting things done. Management as a process, management as a group of managers, management as a discipline. So these are the four basic points of management. These management categorized under these four basic principles. So we can say by combining these four principles or basic categories of this management, we can say management is a group of management is a process where we know, where we think, or where we observe the things to be done by the managers, by the group of managers, through proper channel, through proper process, and through proper discipline. This is the basic definition of a management. Okay. Now, what is the meaning of management is an art of getting things? What is the meaning of this? What is the meaning of this? Management is getting art of getting things. You know, art, what do you mean by art? Art means कला. कोई भी काम करवाना एक कला होता है. ठीक है, किसी को डांट के, फटकार के, डर के आप तो काम करवा सकते हो, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चलता है. मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि कोई भी काम को आप किस आर्ट वे में आप नेगोशिएट करके किस तरह से वो काम निकाल सकते हो. दैट इज द स्किल, that is the skill, and that is we going to learn that particular skill. For example, in your school days, you can say that every day teachers used, at the end of the session or at the end of the class, teacher used to give homework just for the revision, and on next day onwards teacher give you a simple threat that tomorrow you need to complete your homework or you will be punished. Okay, so you have the fear of punishment, getting punishment for the next day, and that's why that fear works and you try to complete your homework. So this is the fear. When you grow up, when you come to your colleges, the faculty of the colleges used to tell you that tomorrow you need to complete this project, or tomorrow you need to complete this assignment, either or rather you will not be able to sit for your external, internal, or whatever semester examinations. I will not going to credit you the marks in your external or internal examination. So there is an another fear, लेकिन वो थोड़ा सा ये पनिशमेंट का फियर था. हो सकता है बाहर आपको नील डाउन करवा दे, कान पकड़ के बेंच में खड़ा कर दे, ये डर था स्कूल में. आप जैसे बड़े हुए, सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपको बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा. आप अगर असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किए तो आपको पेरेंट्स कॉल जाएगा, आपको पेरेंट्स को ईमेल करेंगे, पेरेंट टीचर्स पेरेंट मीटिंग में आपको आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे. देयर इज अगेन अ फियर.
लेकिन वहीं जब आप कोई कंपनीज में जाओगे और आपको जब बोलेंगे कि आज प्रोडक्शन हमें इतना करना पड़ेगा, इट्स बिकॉज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्शंस। आप अगर इस प्रोडक्शंस को ज्यादा से ज्यादा, आप इस प्रोडक्शंस, जितना प्रोडक्शंस दिया गया है वो अगर आप आज कंप्लीट कर देते हो विद इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपका जो रेम्यूनरेशन बनता है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, या इस महीने में सैलरीज आपको ज्यादा मिल जाएगा। तो वो जो एक व्हाट यू कैन से, एक जो आपको लोभ दिखाया गया है, दिस इज द मैनेजमेंट। ये जो लोभ, ये जो आपको फायदा दिखाया गया है, ये मैनेजमेंट प्रोसेस है। ये जो फायदा आपको दिखाया गया है, ये प्रोसेस है। एम आई क्लियर? दिस इज द प्रोसेस, management process, how you manage in a very skillful, in a very tactical way. That is the process of management. Now the management being as a process, according to, I am just reading the just reading the important part of this text. This one is very much important. According to McFarland, management is that process by which managers create, direct, maintain, and operate purposive organizations through a systematic, coordinated, and cooperative human effort. Look at the beautiful word systematic, coordinations, cooperative, human effort is called management, according to McFarland. According to McFarland, management means operative any organizations through cooperations, coordinations, and with a group of human effort. अगर ये तीनों चीज का जो साइमल्टेनियसली इक्वेशंस अगर बन जाता है, तो कोई भी काम आप कर सकते हो, इक्वल हो जाएगा। जब ये तीनों चीज इक्वल सम अप हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशंस, combination of human effort, if comes together, then any particular work or any work can be completed. This is the definitions of McFarland. It's a beautiful definition. The process of management involve the determining the objectives and putting them into the actions. Now, next come to the acha. So far, I have tell you the definition of a management. Is it clear to you? कोई doubt तो नहीं है? This is a very what you can say, very important, crucial paper, management process. Students, am I audible? If I'm audible, please tell me whether the definition is clear to you. Hello. Yes, sir. Okay. Please, I'm requesting you, if you have any doubt, please ask me, because this is a very crucial, and or you can say this is a very important point. You cannot miss any particular point here. Okay, it's a very, you can say it's a really very complicated paper. Though it's an easy, but while drafting your answers now, you will find quite difficult, because many roundabout questions will going to be asked by the faculties of other university. When you will going to sit for your appearing for your final examinations, the questions that will going to come is in a very roundabout way. Roundabout में means घुमा के questions किया जाता है, straight questions नहीं आता है। इसलिए इसका मैनेजमेंट प्रोसेस का स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस नहीं होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा घुमा के आपको क्वेश्चंस करता है। दैट्स व्हाई आपको एवरी पॉइंट्स, एवरी सेक्शंस जो भी है मैं डिस्कस करने वाला हूं, इट मस्ट बी क्लियर। अगर नहीं है तो प्लीज आस्क मी। एम आई क्लियर? The next is the elements or functions of management. The next question is the elements or functions of management. What are the elements, or you can say, what are the functions of the management? Number one, planning. The best important function of management is, number one is planning. Number two is organizing. Number three is staffing. Staffing, 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 how to handle the workers, how to handle the lower labor class category of people working in the industry or working in the company inside. They are called staffing management. Number three is staffing, and number four is directing, number five is controlling. These are the important principles, or you can say these are the important elements or functions of management process.
Number one is planning. Number two is organizing. Number three is staffing. Number four is directing. And number five is controlling. Now, ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है कोई भी मैनेजमेंट प्रोसेस को या कोई भी मैनेजमेंट को चलाने के लिए। 5 प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी कंपनीज, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी शॉपिंग मॉल, कोई भी दुकान, छोटा गुमटी दुकान, उसको भी चलाने के लिए ये 5 पॉइंट्स जरूरी है। ठीक है, आप छोटे से होटल पे चले जाओ, यू गो टू एनी रेस्टोरेंट, यू गो टू एनी होटल, you just ask for any food, how they prepare, उसका पीछे का प्लानिंग्स क्या है, उसका ऑर्गेनाइजिंग कैसा है, वो स्टाफ को डायरेक्ट कैसे करते हैं, वो किस तरह से डायरेक्टिंग करते हैं और किस तरह से कंट्रोल करते हैं इतना सारे क्लाइंट्स को। एक छोटा सा गोलगप्पा की दुकान आप चले जाओ, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ एनी गोलगप्पा शॉप। आप गोलगप्पा खाने जब जाते हो कितने भीड़ रहते हैं, हैव यू एवर ऑब्जर्व दिस थिंग्स? कोई भी फेमस, कोई भी गोलगप्पा, साक्षी में कोई भी गोलगप्पे के दुकान में चले जाओ, अच्छा एक साक्षी के दुकान देखिए कितना भीड़ रहता है। कोई भी एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के पास चले जाओ, कितना भीड़ रहते हैं। ठीक है, तो वहां देखिए रोड पे लोग एक ठेला लगा के गोलगप्पा सेल कर रहा है, उसका मैनेजमेंट को आप देखिए, वो किस तरह से अपना काम को मैनेज कर रहा है। मैनेजमेंट मीन्स हाउ यू मैनेज योर वर्क। एक छोटा सा दुकान, वो भी रास्ते में खुला हुआ है, कभी भी पुलिस आके सेटिंग करता है, यहां से ठेला हटाओ, जल्दी से जल्दी, भीड़ हो रहा है, जैम लग रहा है, गोलगप्पा खाने के चक्कर में वो बाइक इधर उधर लगा देते हैं। मैं ये सिनेरियो आपको साक्षी, ये जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप है, या फिर आपको मैं कहाँ बताऊं, ये एकदम फेमस जगह मैं बता रहा हूँ, एकदम ऑन स्पॉट, जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ रश आवर होता है। आप शाम का टाइम जब ऑफिस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल क्लोज होता है, तब जाके स्टूडेंट देखिए, वो आप देखिएगा, सॉरी, साक्षी गोलचक्कर के पास एक रिलायंस या कोई पेट्रोल पंप है, हाँ थोड़ा सा आगे जाइएगा, देखिएगा गोलगप्पा का स्टॉल लगा हुआ रहता है, आता है दुकान। नाउ at sharp to 5:30 p.m. sharp, you see the rush hours. Only two men standing there with a small thela, and how they managing the entire public, entire customers. Unbelievable, unbelievable. All smile on their face. They meditate on any questions. Somebody is asked, मैं खड़ा खड़ा ये प्रोसेस ये देखता हूँ कभी कभी, आई ऑब्जर्व यार कितना पेशेंस है यार। मुझे तीखा पसंद नहीं है, उसके लिए अलग आलू, देखो एक छोटा सा कटोरी में वो आलू, जो आलू का जो सब्जी वो लोग देता है गोलगप्पे के साथ, वो कैसा पार्ट वाइज रखता है, कभी देखे हो, ऑब्जर्व किए हो? मैनेजमेंट एक उसके लिए तो अलग अलग कटोरी नहीं बनाएगा। सपोज किसी ने कहा मुझे तीखा पसंद है, अलग, मुझे नमक कम चाहिए, अलग, मुझे नमक ज्यादा चाहिए, अलग, मुझे कम तीखा खाना है, अलग। एक ही कटोरी में थोड़ा थोड़ा करके 4 ऐसा ऑप्शंस वो बना के रख देते हैं। मैनेजमेंट है, दिस इज मैनेजमेंट। मैं छोटा सा दुकान देके समझा रहा हूं आपको, आप अच्छे से समझिएगा इसको, दिस इज मैनेजमेंट। ओके, अब जो तीखा खाने वाला है उसको तीखा ही मिलेगा, अब जो थोड़ा सा तीखा कम खाएगा उसके लिए कम, जो ज्यादा नमक खाएगा उसके लिए ज्यादा नमक, जो कम नमक खाएगा उसके लिए कम नमक, जो मीडियम खाएगा उसके लिए तो मीडियम है। तो एक कटोरी में वो आलू का जो स्टफिंग बना के रखते हैं, कितना सारा बाइफर्केशन या कितना सारा डिविजन करके वो रखते हैं, दिस इज मैनेजमेंट प्रोसेस। और जो स्टाफ, एक स्टाफ को रखा हुआ है, कितना बढ़िया तरीके हैंडल कर रहा है। वो स्टाफ सिर्फ और सिर्फ दही भल्ले ही आपको देगा, दही भल्ले नहीं, वो दही वाला जो गोलगप्पा होता है या चटनी वाला जो गोलगप्पा होता है वही आपको सर्व करेगा। ही विल नॉट गोइंग टू सर्व यू दैट वाटर पानी पूरी। वो वाटर पानी पूरी सिर्फ एक ही जन बनाएगा, एक ही जन खिलाएगा। आपको अगर पापड़ी चाट खाना है, कुछ दूसरा कुछ खाना है, तो वो दूसरा वाला स्टाफ के पास चले जाइए, ही इज हैंडलिंग दैट। अच्छा, उसके बाद कैश, कैश बॉक्स देखिए, लुक एट द, चेक देयर कैश बॉक्सेस, every notes been kept separated,
every coins been kept separated. आप 1 रुपया का कॉइन चाहिए तुरंत निकाल के दे देगा, 5 रुपया का कॉइन चाहिए तुरंत निकाल के दे देगा. चेंजेस, दे हैव द चेंजेस, वो भी वो जो कैश बॉक्स में उसको भी मैनेजमेंट करके रखा हुआ है. लुक एट द ब्यूटीफुल. और ऊपर से हाउ कूल माइंडेड, पर्टिकुलरली कंट्रोलिंग जो लास्ट वर्ड है, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग. लुक हाउ ही इज कंट्रोलिंग every customers, he is controlling every customers. None of the customers, single customer get hyper. Okay, look at the some customers are doing the rude behavior. They are behaving in a very rude way, but always they have a smile. The shop owner of Golgappa, they always have a smile on their keep their smile on their face. They never ever get irritated because they know they are my customers, they are my Lakshmi. And if I sell 5 puchkas to them, I earn 20 rupees. So they never ever, they always tolerate whatever you say to them, they just keep on smiling. Okay, so this is the management process all about. Am I clear? समझ में आया मधुस्मिता एंड whosoever is listening to me? Yes, sir. ये मैंने छोटा सा गोलगप्पा का स्टफ मतलब Yes, गोलगप्पा sir. सेटअप करके मैं तुमको मैनेजमेंट प्रोसेस बताया. कभी ये चीज को फॉलो करो. इसका सबसे जीता ज्यादा एग्जाम्पल आप गोलगप्पा का स्टोर में आपको मिल जाएगा. लुक हाउ दे आर मैनेजिंग. तो दिस इज द मैनेजमेंट प्रोसेस. सो दिस इज द प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल समझ में आया? स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. These are the 5 important principles of management process. Am I clear? Now, the next one is the nature of management. The next topic is, the next point is, what is the nature of the management? Okay, now मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, ठीक है. तो सबसे पहला होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेस. इकोनॉमिक रिसोर्सेस, मैं इसको भी एग्जांपल देके तुमको समझाऊंगा, डोंट वरी. I will not just go on explaining. I will going to give you the small, I will going to share you small examples of it. So whenever you will feel any doubt or whenever you are writing your answers now, you just remember those examples that I have been given it to you. The answers will be clear to you. Okay. बट मैंने जो मैनेजमेंट सिखा बताया तुम लोगों को, ये गोलगप्पा वाला एग्जाम्पल फिर एग्जामिनेशन हॉल में लिख के मत आ जाना. प्लीज डोंट डू दैट थिंग. जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू. ये फीचर्स है इंपॉर्टेंट, ये तुमको पता चल जाएगा. नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, नंबर 1 इकोनॉमिक रिसोर्सेस, नंबर 2 इज गोल ओरिएंटेड, नंबर 3 इज डिस्टिंक्ट प्रोसेस. ओके, नंबर 3 इज इंटीग्रेटिव फोर्सेस, number 5 is intangible force, number 6 is results through others. So these are the 6 important, you can say, nature of management. मैनेजमेंट का 6 नेचर है, मतलब क्वालिटीज है. मैनेजमेंट प्रोसेस का 6 क्वालिटीज है. नंबर 1 इज इकोनॉमिक रिसोर्स, नंबर 2 इज गोल ओरिएंटेड, नंबर 3 इज डिस्टिंक्ट प्रोसेस, नंबर 4 इज इंटीग्रेटिव फोर्स, नंबर 5 इज इंटेंजिबल फोर्स, number 6 is results through others. These are the 6 important nature of business management. ठीक है, नेचर है बिजनेस मैनेजमेंट के, ये 6 रूप है. नेचर का मतलब क्या होता है, हो सकता है मैं 6 रूप बता रहा हूं. These are the 6 other phases of management, hiding phases of management. ठीक है. Number 1, economic resources. What is the meaning of this? Now, though you know that management is an important economic resources with land, with land, labor and capital. इकोनॉमिक रिसोर्सेस कहां पर यूटिलाइज होता है? लैंड में यूटिलाइज होता है, लेबर और कैपिटल. कैपिटल मींस मनी, फ्लो ऑफ मनी इज कॉल्ड कैपिटल. As an industrial grows, the need for managers increases. Efficient management is most critical input in the success of any organized group of activity, as it is force which assembles, integrates other factors of production, namely labor, capital and material inputs. Of Now, the inputs of labor, capital, materials do not by themselves ensure production. They require catalyst of management to produce goods and services required. Okay, यहां तो एक्सप्लेन कर दिया है, अब मैं आपको समझा रहा हूं इकोनॉमिक रिसोर्सेस क्या है. इकोनॉमिक रिसोर्सेस किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्रिएट. सपोज
मधुस्मिता, यू नीड टू, यू आप एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, यू नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस। यहाँ जो बुकिश डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन थोड़ा सा क्रिटिकल है। मैं थोड़ा सा आपको इसे और एनहेंस और थोड़ा सा इजी वे में आपको डेफिनेशन देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मधुस्मिता, आई एम आई ऑडिएबल टू यू? ओके, Yes. नाउ, ओके नाउ मधुस्मिता, एज्यूम करो कि आप एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपका बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट, प्लानिंग। द प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यू नीड टू डू अ प्लानिंग। व्हाट इज द बिजनेस एरिया ऑफ लोकेशन? कहां पर होगा आपका बिजनेस का? सबसे पहले आपका एरिया ऑफ लोकेशन। उसके बाद द पीपल्स, ओके, हाउ द पीपल आर देयर आर, एरियाज क्या है आपका, लोकेशंस, पीपल क्या है, ओके। आसपास आप जो बिजनेस ओपन करने वाले हो, आसपास की जगह पर वो पर्टिकुलर सिमिलर बिजनेस है कि नहीं, आप वो चीज ऑब्जर्व करो। अगर है तो आप क्या उसको एक्स्ट्रा आप अपने बिजनेस में दोगे तो वो चमक जाए, दूसरों की आंखों में वो चमक जाए, कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाए, आप एक्स्ट्रा क्या उसमें दोगे? लॉट ऑफ, यू कैन से, लॉट ऑफ गोलगप्पास आर देयर, स्टोर्स आर देयर। आप ये चीज फॉलो करो, एवरीवेयर लॉट ऑफ गोलगप्पा स्टोर्स आर देयर, बट यूनिक, इफ यू गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेसेस ऑफ साकची, there is some uniqueness is there. And what is the uniqueness? Their charismatic attraction through behavior. ये आपको, देखिए उसके बगल में तीन चार दुकान और है, वहां भी इंसान खा रहे हैं, लेकिन अगर यहां 10-15 पब्लिक खड़े हैं लाइन पे, तो वहां 3-4-5 जन ही खड़े हैं। क्वालिटी बिल्कुल सेम है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ठीक है, वो भी सेम चीज बिक रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है? व्हाट इज द एक्स्ट्रा? क्योंकि अगर ये 6 गोलगप्पा देगा तो वो बगल वाला भी 6 गोलगप्पा देगा, अगर ये 7 गोलगप्पास देगा तो दे विल गोइंग टू सेल 7 गोलगप्पास। इससे कोई नहीं है, क्वालिटी बिल्कुल सेम है, जो स्टफिंग है वो भी बराबर बिल्कुल सेम है, मसाला वही है, सब कुछ वही है, प्लेस सही है, ऑर्गेनाइजेशन भी सही है, एक ही है, लोकेशन सही है, आपका जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज सही है, बट व्हाट एक्स्ट्रा इज देयर? द एक्स्ट्रा इज मैनेजमेंट। द एक्स्ट्रा इज मैनेजमेंट। दिस ऑल अबाउट द बिहेवियर। मैनेजमेंट मीन्स द बिहेवियर, ओके, दैट इज वाई दे आर अट्रैक्टेड, दैट इज वाई दे आर अट्रैक्टेड। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी 500 रुपीज ले जाके, अब 500 रुपीज ले जाके देखिए उसका टेक्निक कितना अच्छा है। आप 500 रुपीज ले जाके 20 रुपया का गोलगप्पा खाइए और बोलिए भैया चेंज नहीं है, मुझे चेंज कर दीजिए। आप सबसे पहले वाला दुकान में जाइए, वो आपको थोड़ा सा मतलब इरिटेट हो जाएगा। अरे खाने से पहले आपको बोलना चाहिए ना, आपके पास 20 रुपया, अब 500 का चेंज मैं कहां से दूंगा, 480 रुपया कैसे वापस करूंगा? पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं, कर दीजिए। आप बोलिए नहीं है, look at the face of that particular person, he or she will get irritate on you। आप उसके बगल में दुकान में चले जाइए, सेम चीज कीजिए, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, देखिए वही सेम रिप्लाई आपके पास आएगा। लेकिन जो मैंने दुकान बताया आपको, कभी कभी जाके एक बार देख लीजिए उस सिनेरियो को, वो क्या करेंगे, इतना ब्रेनी है, ही इज सो क्लेवर, मतलब दैट इज वाई ही इज, मतलब पर डे उसका ₹1,00,000 शायद 50,000 to 60,000 का सेल होता है, सुबह 10 बजे से लेके। वो क्या करते हैं, आप अगर 20 रुपया का गोलगप्पा आप खाए हो और 500 रुपया दे रहे हो, वो आपसे कभी इरिटेट होगा ही नहीं। वो 500 रुपीज लेके आपको सिंपल 3 सवाल पूछेगा, भैया चेंज है? नहीं है, स्माइल करके, उतना ही पब्लिक में वो हैंडल करके आपसे स्माइल करके बोलेगा, चेंज है आपके पास? नहीं है। गूगल पे करते हैं? नहीं है। सर भैया फोन पे कर दीजिए ना। नहीं है। उसके बाद धीरे से वो नोट अपना कैश बॉक्स में रख देगा और आपको बोलेगा थोड़ा सा रुक जाइए, मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। आपको 5 to 7 मिनट्स वहां पर खड़े रहना पड़ेगा, यू नीड टू स्टैंड फॉर 5 to 7 मिनट। देखो उसका प्रिंसिपल क्या है, देखो आपको इरिटेट बिल्कुल नहीं किया है, आप भी खुश हो, ठीक है चलो मेरा 500 रुपया तो चेंज हो जाएगा, 20 रुपया गोलगप्पा खा के मैं 480 रुपया
मुझे वापस मिलेगा, मेरा चेंज तो हो गया है। आप उसके लिए 10 मिनट वहां खड़ा रहिएगा। लुक एट द बिहेवियर और लुक एट द टेक्निक। उसके बाद है, लेकिन वो आपको 1 मिनट खड़ा करके रह देगा। इस स्टोरी का पीछे बैकग्राउंड की बात, आप में गोलगप्पा ले आओ तो कभी 500 रुपया के मत आओ। आप या तो 50 रुपया लेके आओ, अगर 20 रुपये का खाना है तो मैक्स टू मैक्स 100 रुपीज, नॉट मोर देन दैट। आप दोबारा गलती, दिस इज द स्किल, हेलो, हेलो। Sir, your voice is not clear. अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो समझ में नहीं आया? इज इट क्लियर टू यू? मैंने जो एग्जाम्पल अभी दिया है, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. हेलो। Yes, sir, it's clear. Okay, this is the clear. So this is called the management. नाउ पहला है, सबसे पहला जो है मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, द फर्स्ट वन इज द इकोनॉमिक रिसोर्सेस. सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट इफ यू वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड आर इकोनॉमिक रिसोर्सेस टू स्टार्ट एनी बिजनेस, मीन्स पैसा आपको चाहिए कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए। अगर आपके पास पैसा आ जाता है, उसके बाद आपका क्या चाहिए? कैपिटल, लेबर एंड एज वेल एज मटेरियल इक्विपमेंट, मटेरियल्स। उसके बाद ये तीनों चीज आपको जरूरत पड़ेगा, लेबर, कैपिटल, मटेरियल्स, से तीनों चीज का जब इक्वेशन सिमिलर हो जाएगा, तब आप इस चीज को यूटिलाइज करेंगे टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। Okay, and to provide a good and services to the customers, you need to know the skill of management. Okay, how to utilize your resources, how to utilize your economic funds, or how to utilize these labors. Okay, so if these three equations are correct, then only the business setup or business startup which you have set up, it will be going to get success. So first important nature of management is utilizations of economic resources in a proper channel, in a proper way. Next come is goal oriented. Now, management is purposeful activity. It coordinates the efforts of workers to achieve the goal of the organizations. The success of management is measured by the extent to which the organization goals are achieved. It is imperative that the organizational goal must be well defined and properly understood by the managers at various levels. Okay, first of all, you need to be have goal oriented. For example, the same stuff or the same examples I am going to give it to you. Suppose every day from 10 a.m. to 9 p.m. night, the what you can say, that Golgappa person have a target that today I'll going to sell every single piece of my Golgappas to the customers. Okay, none of the single Golgappa will remain over there. This must be the goal orientation, this must be the goal oriented of that particular business who is selling that stuff. Okay, the same with the management also, the same with the organization also. The organizations का goal क्या होता है? I need to sell, I need to make a profit, anyhow, any cost, I need to make a profit. And to make a profit, the skill is required. What is the skill? The skill of management. The skill of management means you need to utilize your management skill very purposefully. Okay, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज गोल ओरिएंटेड. ओके, यू मस्ट बी अ गोल ओरिएंटेड, and for that you need to make a draw a map of it. You need to draw a map of it. For example, suppose now you all people are trying to complete your MBA. Okay, so first of all, you have some perceptions in your mind. What is the perceptions in your mind? That today
Getting a job is nothing. Today, getting a job, doing an MBA and getting a job is very easy to, because now every company wants there is a huge requirements of an HR, business executives, managements and all. Okay, in before MBA. The main important goal is what the salary they will going to offer to you. The salaries, the packages they will going to offer it to you. This one is the most important thing. नौकरी मिलना एमबीए करने के बाद, वो भी एचआर मैनेजमेंट्स या फिर सेल मैनेजमेंट्स, जो भी है आप लोग करते हो स्पेशलाइज्ड कोर्स, उसमें आप जब कंप्लीट करोगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई कंपनीज दे विल गोइंग टू हायर यू. It's no need to worry about that. After the end of the semester, if you're going to sit for your placements and all, if the placement they are going to offer you for the placements or all, definitely you're going to get the letter, offer letter. But the problem is that how much packages or how much salary they are offering you. Now the student have their goal oriented, not of result, that how much marks I'm securing. The first thing is they have the goal oriented, and engineer students have the goal oriented that I need to complete my internship and get a good job with a good package. This is the goal orientation, and for that they need to utilize their resources, they need to utilize their managements, they need to utilize their integrative force. Okay, then only they can achieve that particular thing. So the next important of nature of management skill is goal orientated. The next is distinct process. Management is also known as the distinct process, consisting of such function such as planning, organizing, staffing, and directing and controlling. So these are the distinct process of management. Distinct process का मतलब क्या होता है? Different features of management process. As similar coin, but having different heads of management, different work of management. क्या होता है different work of management? Distinct process. वो क्या होता है? Planning, organizing, staffing, directing and controlling. These are the distinct process of management. Next आता है integrative force. What's the meaning of integrative force? Integration of human resources to achieve the desired objective. Utilization of human resources. Okay, utilization of human resources. Suppose for example, आप कोई कंपनीज में काम कर रहे हो, आपके अंडर में 5 लेबर्स या आपके अंडर में 10 लेबर्स काम कर रहे हैं. आप उस लेबर्स को कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और कैसे उनसे काम निकलवा रहे हो, दिस इज द प्रोसेस. दिस इज ऑल्सो द अनदर नेचर ऑफ द प्रोसेस. आप उनसे कैसे काम निकलवा रहे हो, कैसे आप उनसे अपना जो बेस्ट है वो उससे निकाल रहे हो, ये मैनेजमेंट सिखाता है. ये एक मैनेजमेंट प्रोसेस है. दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिव फोर्स. दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिव फोर्स. ओके, इंटीग्रेटिव फोर्स का मतलब यही होता है, हाउ टू अप्लाई द नॉलेज, द एक्सपीरियंस, द मैनेजमेंट स्किल, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टू गेट द वर्क डन by the laborers that has been working under you. This is called integrative force. Am I clear, Madhusmita? Yes. Hello. कोई अभी तक जो मैं पढ़ाया हूं कोई डाउट है ना? डाउट नहीं है ना? No, sir. प्लीज आस्क मी, बिकॉज थोड़ा सा ये डिफरेंट है, मैनेजमेंट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे, इजीएस्ट एग्जाम्पल देख के, बिकॉज द टेक्स्ट जो मेरे पास है मैनेजमेंट प्रोसेस का, द टेक्स्ट इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड. टाटा मैकगिल का बुक्स है मैनेजमेंट प्रोसेस. द एग्जाम्पल्स, द डेफिनेशंस, द प्रिंसिपल्स आर रियली रियली वेरी डिफिकल्ट. अगर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता था तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता था. आई कैन शेयर द स्क्रीन एंड शो इट टू यू दैट हाउ डिफिकल्ट टाटा मैकगिल का बुक्स जो है ऑफ मैनेजमेंट इज रियली वेरी टफ. ओके, द मतलब जो भी एग्जांपल्स यहाँ दिया गया है वेरी घुमा के, स्ट्रेट कोई एग्जांपल्स है ही नहीं. लॉट ऑफ इक्वेशंस आर देयर, लॉट ऑफ थ्योरीज आर देयर,
And on the basis of those theories, the examples has been created. So that's why I'm telling you, I'm trying my level best to make it, the concept is clear, to make the concept is clear, as precise as simple. The next one is result through others. The managers cannot do everything themselves. Okay, they must have the necessary ability and skill to get work accomplished by through the efforts of others. Now they must have motivate the subordinate for the accomplishment of the tasks assigned to them. ओके, रिजल्ट और रिजल्ट थ्रू अदर्स का मतलब होता है आप कितने अच्छे तरीके से आपके सबॉर्डिनेट से आप काम निकलवा सकते हो, दैट इज द रिजल्ट ओरिएंटेड। क्योंकि मैनेजर्स कंपनी के काम करने के लिए जाते नहीं है, ठीक है, जो मैनेजर्स है वो डायरेक्शंस देते हैं, दिस इज द वे यू नीड टू डू द वर्क, दिस इज द प्रोसेस यू नीड टू कंप्लीट द वर्क। ओके, तो कितने अच्छे तरीके से, कितना अच्छा डिजाइनिंग वे में, द वर्ड आई एम यूजिंग द डिजाइनिंग वे, कितना अच्छा डेकोरेटिव वे में आप अपना मैनेजरियल स्किल को यूटिलाइज करके अपने सबॉर्डिनेट से काम निकलवा सकते हो, उसे कहते हैं रिजल्टेड थ्रू अदर्स। सो ये एक और नेचर ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है। एम आई क्लियर? नेचर ऑफ मैनेजमेंट का 6 पार्ट क्लियर है? 6 पार्ट। ओके, द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट एज अ साइंस। देखो मैनेजमेंट को साइंस से भी तुलना किया गया है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, इट रिजेम्बलेंस टू साइंस। देखो मैनेजमेंट को साइंस से ये किया गया है, सच अ मतलब इंपॉर्टेंट द मैनेजमेंट इज अबाउट। मैनेजमेंट को साइंस के साथ जोड़ा गया है, कोऑर्डिनेट विद द साइंस। नाउ management as a science, management has come to be recognized as a science recently इस पॉइंट्स को इंप्लीमेंट किया गया है। Prior to this, the knowledge of the practice of management was not systematically organized and experienced. Now the only organized body of knowledge by the management practitioners are scholars. This organized body of knowledge has its own distinct boundaries and field of activity. Its study helps in gaining a rational approach to the development of means for accomplishment of certain goal. This was called the management of science. Management of science का मतलब होता है, for an example, you can have to know the knowledge, you know the systematic, organized, and experienced way to utilize your these skills to complete the task, to complete the work. And this can only be done if you are a scholar in management. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है knowledge by the management practice and scholars. If you have this, if you are a scholar, if you have a good practice, if you have a good utilizations of your brain, you can have the combinations of systematic, organized, and experienced way, then only you can utilize your subordinates to complete the task. So with the definition of, with the using of systematic, organized, and experience, this combination of these three is called the management as a science. मैनेजमेंट को साइंस के साथ कंपेयर किया गया है। Why? Because to have a science, you need to have knowledge, you need to have the systematic, you need to have an experience, you need to have what you can say, practice. These are the things na, to complete a practice in, to complete a practical in science, you need to have do this, or you need to have all these things. The same way, to complete a management skill, you need to have these important features in you. That is why here the writer compare management as a science. The next one, basically the subject should have following characteristics as a science. Management as a science, why it is called by the writer? Because it has its own distinctive features. And what are the distinctive features? Number one, it should be systemized body of knowledge, including concept, principle, and theories.
It should have systematic body of knowledge because it include concept, it include principles, it include theories. ये तीनों चीज अगर नहीं होता है तो कोई भी मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, आपके पास प्रिंसिपल होना चाहिए, आपके पास थ्योरीज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं फिर से वही मतलब वो जो स्टॉल के बारे में मैंने जो स्मॉल फूडी स्टॉल के बारे में बताया, गोलगप्पा स्टॉल, उसके बारे में सोच के देखो। जो वहां जो इंसान जो काम कर रहा है, जो ठेला लगा के गोलगप्पा बेच रहा है, उसको उस काम में नॉलेज है। ठीक है, इट इज अ साइंस। उसको उस काम पे नॉलेज। कोई भी एरे गैरा जो कोई जिसका नॉलेज नहीं है वो जाके गोलगप्पा, मैं अगर वहां पर जाके गोलगप्पा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सेल द गोलगप्पा। नो, वो स्किल चाहिए, वो फास्ट। वो गोलगप्पा क्या तोड़ के आलू डाल के पानी में डुबा के देना, इट्स नॉट अ स्किल। स्किल मीन्स हाउ फास्ट, हाउ एक्यूरेट, हाउ with a beautiful managements of each and everything, with a beautiful coordinations of hand and eye. These are the important signs. वो बिना देखे मतलब आपको बिना देखे वो आप किस किस जगह खड़े हो वो एक बार देख लेते हैं, और बिना देखे ही जस्ट डिलीवरिंग ऑल द गोलगप्पास प्लेट इनटू योर प्लेट एक्यूरेटली। तो हाउ मच प्रैक्टिस इट रिक्वायर, कैन यू थिंक? तो मैनेजमेंट रिक्वायर ए स्किल, दैट इज वाई मैनेजमेंट इज अ साइंस। दूसरी बात, प्रिंसिपल, उसके बाद थ्योरीज। उसने वहां पर दुकान खोलने से पहले बहुत सारा स्टडीज किया है, थ्योरीज को पढ़ा है कि मैं अगर यहाँ पर छोटा सा स्टॉल लगाओ इस चीज का, क्या मेरा सेल होगा? क्योंकि दो तीन चार दुकान और है पहले से। तो मैं अगर सेम सिमिलर जॉब या सिमिलर स्टॉल यहाँ पर खोलूं, तो विल इट बी पॉसिबल फॉर मी टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ दिस? तो सबसे पहले वो थ्योरीज को पढ़ा है, दैट इज वाई इट इज अ साइंस। उसके बाद वो अपना नॉलेज और कंसेप्ट को यूटिलाइज किया है। उसके बाद अपना नॉलेज लगाया, उसके बाद वो कंसेप्ट को अच्छे से यूटिलाइज किया, और ये तीनों जब ये तीन और चार जब एक साथ मिल गया, तो वो एक एस्टैब्लिश्ड वेल बिजनेस में परिवर्तन हो गया। दिस इज दैट इज वाई मैनेजमेंट ऑल्सो वर्क एज अ साइंस। द नेक्स्ट है, इट शुड हैव मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। Management always need a scientific inquiry. The third one, it should establish cause and effect relationship. Management always establish a cause and relationship. इसका मतलब क्या है? हमेशा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये बिजनेस मैनेजमेंट हमें सिखाता है। ओके, हमेशा आप ये मत सोचो कि एवरी टाइम ऑनवर्ड्स you will be on a verge of profit. No, at the time of heavy raining, at the time of heavy raining, at the time of shivering cold, can you do you feel that the cold at 9 p.m. in a cold chilled night, 9 p.m., do you think the customer will going to eat those stuff? Do you think? No, the sell will gradually going down. And in the heavy rainy seasons, it's quite what you can say, it's quite a challenging job। हेवी रेनिंग सीजन में क्या तुमको लगता है कि वो गोलगप्पा का जो दुकान है वो एकदम बढ़िया चलेगा? नहीं। क्यों? आप ही कंप्लेन करोगे ना, वो पापड़ी जो है नरम हो गया है। देखो, तो दैट इज वाई आपका, इसलिए यहां राइटर बता रहा है, यू ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप ऑफ एनी बिजनेस। द नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल शुड बी वेरीफाइड। उसके बाद आप अपने मैनेजमेंट्स को लेके, आपका काम को लेके, आपका बिजनेस को लेके आप एवरी टाइम वेरीफाई कीजिए। उसके बाद रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। वॉट एवर द बिजनेस यू आर प्रिडिक्टिंग, इट शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब यू प्रॉफिट होना चाहिए। उसके बाद है, इट शुड बी एप्लीकेशंस, यूनिवर्सल एप्लीकेशंस। यूनिवर्सल एप्लीकेशंस का मतलब होता है you must be go beyond your boundaries, means you need to take some risk. You need to take some risk. No risk, no gain. You need to have
or you need to take risk to get some profit or to get success in your life. You need to take risk, and business is a type of risk oriented, because you always prepare for the negative impact of business, any business. Am I clear, Madhusmita? So these are, that is why it is called management as a science. Hello, am I clear? Yes, sir. Okay. कोई डाउट नहीं है ना? पक्का? प्रियोतोष एंड मधुस्मिता, any points you want me to repeat? No, sir. Okay, the next point is planning. What is planning? Management तो समझा दिया मैंने. What are the important features of management? What is the nature of management? Now planning. What is planning? Planning is a mental process which require the use of intellectual faculties, foresights and judgment. इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है इंटेलिजेंट, वेरी विटी. तो प्लानिंग का मतलब होता है, प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर वेरी इंटेलेक्चुअल फोरसाइटिंग. फोरसाइटिंग का मतलब दूरदृष्टि एंड क्विक प्रॉम्प्ट जजमेंट. ये तीनों अगर जिसके पास है वो अच्छा प्लानिंग कर सकता है. इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, selecting and relating of facts, and the making and using of assumptions regarding the future visualizations of any formal process activities. Okay, whatever the future, in future you need to visualize that what will going to happen. Suppose, Madhusmita, after completing your geology, you just got down and you are trying to complete your MBA. So you always make a planning, you have your planning at the back of your mind, and you has the visualizations in your mind that after completing my MBA, what is the goal I need to achieve, where I would like to be in next 2 years. Okay, so you have the visualization, you have the perceptions in your mind from early onwards whenever you are trying to taking this MBA as a subject. That is why a good planner, who is a good planner, he is always have some important features or important steps he need to take. Some, he or she need to take some important steps. What are the steps? Determination of a goal. The first, very strong determination of a goal. Number one is future forecasting environment, ability to have a future forecasting environment. You can see your future. अगर मैं ये सब्जेक्ट लेके पढ़ूं, अगर मैं यहां जाऊं, ये पढ़ाई करूं, तो आगे फ्यूचर में मेरा क्या स्कोप है. दिस ऑल कम्स अंडर प्लानिंग. नेक्स्ट है कोर्स ऑफ अट्रैक्शन, course of action, course of action, sorry, not course of attraction, course of action. What is your alternative course of actions will be there. You need to utilize those things also. Evaluations of various alternative and formulations of planning. Okay, evaluations, you need to evaluate your alternative plan that you are having in your mind. This also comes under the important features of planning. And the last one is preparing of schedule, program and budgets. Budget का मतलब वही related to your money. Before investing or before doing any business, before doing any work, you need to make a schedule, you need to make a program of that, and you need to think about the budget. Suppose हम यहाँ कहीं घूमने जा रहे हैं, हम कोई घूमने जा रहे हैं, फैमिलीज टूर के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? प्लानिंग करते हैं. ठीक है, प्लानिंग क्या होता है? यहां से कितने बजे निकलेंगे, क्या किसमें रिजर्वेशन करेंगे, कितना रिजर्वेशन वेटिंग लिस्ट में है कि नहीं, कंफर्म हुआ कि नहीं, ये सारा कुछ प्लानिंग चलता है.
उसके बाद आप लोग प्रोग्राम बनाते हो, हम लोग कब जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, कौन सा ट्रेन हम लोग यहाँ से करेंगे, कितने दिन वहां रुकना है, ये सारा कुछ प्लानिंग प्रोग्रामिंग हो जाता है। उसके बाद बजट में आते हैं, मीन्स फाइनेंशियल पार्ट आप लोग देखते हैं, कितना खर्चा करेगा पर, कितना खर्चा होगा, होटल्स का कितना बिल होगा, फूड का क्या है, लॉजिंग का क्या है, ट्रैवलिंग का क्या है, एक्स्ट्रा अगर हम लोग कुछ खरीदते हैं उसका क्या है। तो ये सारा जो है सब कुछ प्लानिंग्स के अंडर में ही होता है। आप जब तक कोई भी काम प्लानिंग एग्जीक्यूट करके नहीं करोगे, प्लान आपका अगर पहले से प्रिपेयर नहीं रहेगा, वो काम कभी सक्सेसफुल होता ही नहीं है। दैट इज वाई प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे। प्लीज मधुस्मिता हमको रिमाइंडर दिला देना। इन नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ओके, Yes, sir. थैंक